Hello everyone, this is your master teacher Aditya. I'm teaching over here mathematics and teaching mathematics since last 5 years. So I'm giving you my brief introduction for all of those who are joining me for the very first time. Guys, over here on this platform, I'm teaching class 11th and class 12th mathematics, and I'm teaching since last 5 years and also have taught in more than 30 plus engineering, MBA, and MC colleges. I have done my graduation from NIT Jaipur and also cleared the examination IIT JEE, which is an entrance examination for IITs. I have also cleared CAT examination, which is entrance examination for IIMs, Indian Institute of Management, top MBA colleges of the country with 90th percentile in quantitative aptitude and logical reasoning. So this is just a brief introduction about myself. Welcome all of you. This is your grade 12th मैथमेटिक्स सेशन. फटाफट से क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इस सेशन को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ. वी विल कॉल देम इन दिस सेशन एंड मेक श्योर दैट दे आर ज्वाइनिंग एंड लर्निंग ओवर हियर. ठीक है, अच्छे से, ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिलेगी. Now, this topic is of term 2. Before this topic, we have done 6 sessions of indefinite integration. In the last class, I have started with the fundamentals of definite integration. I have told you what exactly is definite integration, and now we will be discussing about properties of definite integration part 1. पहला सेशन है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पार्ट 1 का. इसका मतलब अगला पार्ट भी आएगा. सो वी विल बी डिवाइडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन इन 2 पार्ट्स. 2 पार्ट में हम ये पढ़ने वाले हैं. इसके बाद आपका एक और सेशन आएगा वेयर विल बी प्रैक्टिसिंग मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन. सो गाइस, कुल मिलाकर on this definite series we are having 10 lectures, 6 on indefinite, 4 on definite. I hope you have already watched the previous 7 sessions and right now eighth one and 2 more are about to come. Welcome Vanchika. सर ये चैप्टर 8 है ना, बिल्कुल इंटीग्रेशन है ये आपका. What is the today's objective? Obviously properties पढ़ने वाले हैं, but we will start with the properties and after explanation of the properties where I will not take more than 10 to 15 minutes, we will start solving problems, miscellaneous problems on various properties, and before the session ends you will be having the homework. आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा नोटिफिकेशन जो आपके बहुत काम आ सकता है. इट्स वी हैव स्टार्टेड बिजनेस मैथमेटिक्स फॉर सीए के लिए हमने मैथ शुरू कर दी है. ये आपकी पहली सीरीज है. दैट मींस if this is the first series, obviously second and third is going to come. Second for logical reasoning and third for statistics. So we are planning to score 40 out of 40 in this business mathematics for CA series 1 and we have completed the chapter indices. बहुत easy chapter है. हर हफ्ते आपकी 2 क्लासेस लगेंगी, 2 lectures per week. So you will not be having much load to learn, but still you will be growing. तो साथ मिलके पढ़ते हैं, मचाते हैं. So if you are preparing for CA, make sure to also update me. I will take care of you. अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, you can also comment down. चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना. आगे बढ़ने से पहले I will requesting you, if you are over here, to show your love, hit the like button, share this video with your friends, and if you have already hit the like button and share this video with your friends, thank you so much guys. And अगर आप पहली बार आए हो तो make sure कि हम लोग सब्सक्राइब करेंगे. ओके, आगे बढ़े, अब पढ़ना शुरू करते हैं अपन लोग. अच्छा, एक होमवर्क क्वेश्चन और था यार. इन द लास्ट क्लास आई हैव गिवन यू होमवर्क क्वेश्चन, है ना. अगर आप लास्ट क्लास में, इफ यू प्रेजेंट इन द लास्ट क्लास, अ बेसिक लॉजिकल क्वेश्चन. See why I am giving you these basic logical questions, so that you will develop your logical thinking. If you will develop your logical thinking, you can apply the same process in your mathematics chapter. अब बहुत सिंपल सी बात बोली थी यार. Matthew's father, so this is father of Matthew, this is Matthew. Down the line, पिताजी बड़े हैं, बेटा छोटा है. So this is the father of Matthew in comparison of age, and this is Matthew. Now father of Matthew is having 3 sons. That means one of the son is Matthew.
Okay. Other two sons are Joseph 1 and Joseph 2. Joseph 1 and Joseph 2. अब क्वेश्चन क्या पूछा है, कैन यू गेस द नेम ऑफ थर्ड सन, तीसरे बेटे का नाम क्या था, तो आंसर वाज ऑप्शन नंबर सी, मैथ्यू. सो गाइस यू मस्ट हैव अटेम्प्टेड, बहुत सिंपल सा सवाल था आपका ये. ठीक है, तो आप लोग हर सेशन के एंड में मेक श्योर कि यू आर आंसरिंग इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल बी शोइंग द लीडर बोर्ड इन द अपकमिंग क्लासेस. अब प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं. प्रॉपर्टीज से पहले क्या क्या किया हुआ है, लेट्स क्विकली रिकॉल इन द डेफिनेट. In the definite integration, we have understood that if integration of function f x, function of x with respect to dx, if I will integrate and let's suppose the answer is function g, मान लेते हैं. Now, in case of definite, as a name such a definite answer, that means we are very sure from where to where we are integrating. So in this case, if we are integrating from x equals to a to x equals to b, we will apply the limit over here. That is value of this function from a to b. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, value of function g, which is the answer of integration of function f, gb minus ga. ये हमने लास्ट क्लास में किया था. तो दिस वाज द बेसिक समरी ऑफ द लास्ट क्लास, बेसिक फंडामेंटल. नाउ इन दिस क्लास we will be learning properties. Now first property is completely based upon your substitution approach. I hope आपने पढ़ा होगा substitution approach of in indefinite integration. पढ़ा नहीं पढ़ा? तो वहीं से इसको पिक किया है. तो हमने यहां पर क्या बोला, इफ x is equals to t, assume कर लो. If you will assume, so differentiate both the side. dx by dx is equals to dt by dx. dx by dx is equals to dt by dx. dx by dx 1 बन जाएगा. अगर ये 1 बनेगा तो 1 is equals to dt by dx. और इससे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dx is equals to dt. What was the purpose of substitution? हम substitute करते क्यों थे? Because we want to change our function. Yes or no? Now in this case, if you will replace x with t, dx in this case will be replaced with dt. x equals to a, x equals to t, तो t equals to a. समझ में आया? If x is equals to a and if x is equals to t, तो t is also equals to a at x equals to a. Is that clear? Similarly, if x is equals to b, अगर आपका x b होगा, हमें पता है, we have assumed that x is equals to t. So at x equals to a, t is equals to a, and at x equals to b, t is equals to b. This is the basic concept. And property number 0 is used very rarely. बहुत rarely काम आती है आपके. You will hardly see any question on this property. और आपको देख के लग भी रहा होगा कि यार this is some kind of joke. Why we are doing x equal to t when we are getting exactly same function? We are having exactly same function. The only thing is we are changing the cover. है ना, जैसे आपका इट्स लाइक द डिश इज एग्जैक्टली सेम. यू आर गोइंग टू ईट एग्जैक्टली सेम थिंग, इट जस्ट यू आर चेंजिंग द रैपर. रैपर बदल गया बेटा, लेकिन खाना वही है. सो इन दिस केस x इक्वल्स टू t इज द की. ये हो गया आपका प्रॉपर्टी नंबर 0. नो मच यूज ऑफ इट, रेयर यूज ऑफ इट. तो मैं इसको आई एम गिविंग यू रेयर, आर फॉर रेयर. ओके. Now P1, what does P1 says? P1 says if you will interchange the limit, your limit, if you will interchange the limit, yani ki in this case we are integrating, let's suppose I1 is the integration of function f with respect to dx from x equals to a to x equals to b, and I2 is equals to
integration of the same function, but from x equals to b to x equals to a. Now guys, if you will write down the answer, now I know, assuming the integration of function f is g, so this will be upper limit gv minus ga, and this is upper limit ga minus gb. Now you will see they both are minus times of each other, so I can conclude that I1 by I2 is equals to minus 1. आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, I1 by I2 is equals to minus time. Okay, I1 by I2, or you can say I1 is minus times of I2 or I2 is minus times of I1. दोनों एक दूसरे के माइनस टाइम्स हो जाएंगे. इन पर्टिकुलर हम बात करें, दिस इज जस्ट जनरल थिंग, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू ए, यानी कि अगर मैंने बोला ये भी ए हो गया तो जी ए माइनस जी ए ऑब्वियसली जीरो तो आना ही है. तो आपको रटना नहीं है, यू डू नॉट नीड टू मग अप एनीथिंग, ऑल यू हैव टू डू इज अंडरस्टैंड द बेसिक. सब बेसिक बेसिक बातें समझ लो यार. वंस यू विल अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स ऑफ द मैथमेटिक्स, आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा. So I hope you clear. Property number 0, that replacing x with a t does not change the function, does not change the answer. Property number 1, that inverse or a reversal of the limits will change the answer negative time. Integration becomes minus times if you will reverse the limit. ये अपना point था यहाँ पर. अच्छा, on Telegram guys active रहा करो, early morning around 10, 11 और 12 के around I'm daily posting a question over there, a quiz over there, और बहुत सिंपल सा conceptual question आपके सामने पुट करता हूं मैं. तो आप वहां पर ज्वाइन करोगे एंड यू विल बी आंसरिंग दैट. मैनी पीपल आर आंसरिंग ओवर देयर, हंड्रेड्स 200 आंसर्स डेली, 100 to 200 पीपल आर आंसरिंग ओवर देयर ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो अगर आप डेली अटेम्प्ट करोगे, दिस विल बी अ पार्ट ऑफ योर हैबिट, एटलीस्ट अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टुडेज लेक्चर, या फिर अभी इस लेक्चर के खत्म होने के बाद आप उसको अप्रोच करना. ठीक है. सो आई होप आप टेलीग्राम ग्रुप पर हो, नहीं हो तो देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पर एक लिंक है. क्लियर. चलिए, अच्छा एक और चीज, आप लोग के इंटीग्रेशन काम आता है इन योर, जैसे कि हमने जो आपका जितने भी कोर्स होंगे, आपके सीए वाला कोर्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये काम आएगा. इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन बेसिक. Business mathematics is having basics of differentiation and integration. ये दोनों चीजें आपकी हैं, बहुत बेसिक है. यानी कि दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपको बहुत सॉलिड नॉलेज होनी चाहिए. दे आर एक्सपेक्टिंग बेसिक, कि यू नो व्हाट इज दिस बेसिक प्रॉपर्टीज एंड अदर थिंग. ठीक है. अब प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोलता है? प्रॉपर्टी नंबर 2 says example that I wanted to go, for an example, from Jaipur to Delhi. मुझे जयपुर से दिल्ली जाना है, but in between I want to take a rest. So this property says it's allowed. In real life it's allowed. मान लीजिए जयपुर टू दिल्ली के बीच में, let's take another station. Let's take station A, station B. तो जयपुर to A, and then you will go from A to B, and then you will go from B to D. Yes or no? तो ये प्रॉपर्टी है. आई बात समझ में? तो प्रॉपर्टी सेज दैट इफ यू आर कवरिंग फ्रॉम लिमिट फ्रॉम ए टू बी, अगर आप ए से बी कवर कर रहे हो, एंड इफ अ पॉइंट सी लाइज इन बिटवीन, you can break the integration about that particular point. But the question arises why we are doing so. आज का क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड था. A question which I have posted on Telegram was exactly based on this. लेकिन ऐसा क्यों? ठीक है. तो ये प्रॉपर्टी कब लगानी है? When situation changes, when function changes, जब आपका फंक्शन चेंज हो जाता है. For an example, what was the today's question? That mod of x dx from -1 to 1. Now guys, mod function changes in this case about 0. 0 के about change हो जाता है. So from -1, I'm using property number 2. So property number 2 says I need to break the function about 0, and I will write down the function in that particular interval. Negative है,
In that case, -1 to 0, it's minus of x and dx. Plus, from 0 to 1, if you will remove the mod sign, it will be x dx. अब ये कैसे किया? How I will write down mod x is equals to plus minus of x? ये समझने वाली बात है. So this is a part of class 11 functions. There is something called as modulus function. So मैं आपको brief में समझा देता हूँ. Modulus function mod of x is equals to, मैं आपको डिटेल में brief में समझा रहा हूँ. Mod of x is equals to x if x greater than 0. If x less than 0, then it is minus x. You can replace x with x minus 1. You can replace x with x minus 1, x square minus 1, x plus 1, any other function. It does not matter. तो आप चाहो तो इसको f भी लिख सकते हो, इसको चाहो तो आप f भी लिख सकते हो. It's just whatever is inside of mod, if it is greater than equal to 0, then you can remove the mod sign without changing anything. But if inside function is less than 0, how we will find out? By calling so. ये अपन लगाकर देखेंगे. जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या बोला? Mod of x. Now, या फिर हम इसको एक एग्जांपल लेकर देता हूं. Now let's suppose it's mod of x minus 1. Now mod of x minus 1. x minus 1 greater than equal to 0 का मतलब क्या हुआ? x greater than equal to 1. Now this is done in the class 11 chapter linear inequality. पढ़ा नहीं पढ़ा हम लोगों ने? क्लास 11 में अगर आपके पास मैथमेटिक्स थी तो उसमें टॉपिक था. So you will write down x minus 1. Now if x is less than 1, just reverse the sign. You will be having 1 minus of x. So you can see about which point about x equals to 1 function is changing its value in this case. So wherever the function changes above the particular point, you will need the property number 2. उस property की आपको जरूरत पड़ेगी. But question arises, what are those specific cases? आपको दो चीजें सीखनी होंगी. Now this will be your homework to read modulus function. You will surely have a question on the basis of it. Modulus function and greatest integer function. ये दो function आप करिए, आप question सारे property number 2 के यहीं से बनते हैं. Now property number 3. Now this is the last property for the day. Rest of the properties, property number 4, property number 5, property number 6 will be in the next class. Property number 4 and 5 in the next class. Now what does this property says? अब ये property क्या बोलती है कि you can replace x with a plus b of minus x. ठीक है. प्रॉपर्टी क्या बोलती है? यू कैन रिप्लेस x. अच्छा आप करके देखते हैं. इफ आई विल अज्यूम, अब देखो यहां पर यू विल यूज प्रॉपर्टी नंबर 3 इज बेसिकली सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी नंबर 0. मैं आपको दिखाता हूं कैसे. आपको क्या करना है? रिप्लेस x और अज्यूम x एज a प्लस b माइनस ऑफ t. लेट्स अज्यूम. Now differentiate both the sides. On differentiation, you will have dx is equals to minus of dt. Cool. Now this integration will be, now at x equals to a, if x will be equals to a, t will be equals to b. If x will be equals to b, put b over here, b is equals to a plus b minus t, b cancel, t equals to a. And dx is equals to minus of dt. And f of a plus b minus t. Or you will write down this. You will write down f of a plus b minus t, and dx will be minus of dt. Okay. Now, if you will observe, limit has been reversed. तो अब मैं क्या करने वाला हूं यहां पर? ये अपन ने अज्यूम किया. अब मैं फिर से लिमिट को रिवर्स करूंगा. इफ आई विल डू द रिवर्सल ऑफ द लिमिट्स, आई विल अगेन मल्टीप्लाई द माइनस साइन एंड राइट reversing the limit. Now minus minus will become plus. Property number 1. We have applied property number 1 in this case. And apart from this, now I will again substitute or apply limit number
property number 0 saying writing x as t does not change the whole answer. ये है यहाँ पर. तो guys, this is property number. Property number 3 is a combination of property number 1, property number 0 and a substitution. कौन सा substitution? x is equals to a plus b minus t. और ये कौन सा substitution है? Putting t is equals to x back again. और ये कौन सा है? That reverse of the limit. लिमिट रिवर्स हो जाती है. I1 is equals to minus times of I2 if both are having reverse limit. और एकदम उल्टी उल्टी लिमिट हो जाएगी यहाँ पर. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3. नाउ let's start solving the question. So as I promised, we have done all the properties. Property number 0, changing x, writing x as t does not change the function or answer. Property number 1, reversal of or inverse, or you can say reverse of the limits, writing upper limit as lower limit as upper limit will make integration minus times. Property number 2 says if I am integrating from a to b and if c is a number in between, I can break the integration about that particular point. Now why do I need it? In most of the questions you will found it in case of modulus function and greatest integer function. I have explained modulus function. Now it's your homework to check out greatest integer function. नहीं तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा. Yes, Kaju. बिल्कुल, NCERT is more than enough. The problem is that we do not stick to one book. आप में से बहुत सारे लोग का ये डाउट है जो काजू ने पूछा है कि एनसीईआरटी से काम चल जाएगा. बिल्कुल भाई, एनसीईआरटी लगाओ और आपको लगता है कि एनसीईआरटी रिवाइज इट 2, 3, 4 टाइम्स. जब तक आपको ये ना लगे ना कि सर ये मेरे से हो गई है पूरी, पहले वो कर लो, है ना. तो अगर आपको सीबीएसई का एग्जाम निकालना है, अगर आपको बोर्ड का एग्जाम निकालना, फर्स्ट प्रायोरिटी इज डू योर बुक्स. इसके अलावा किसी किताब की कोई जरूरत नहीं है, लिख कर देता हूं. और ये आपका और मेरा नहीं, दिस मेनी पीपल हैव सेट द एग्जांपल्स. और आपको लगता है दूसरी किताब की जरूरत है आपको, तो इसका मतलब है कि हम लोग किताब पर फोकस ज्यादा है. हम लोग वी आर नॉट फोकस ऑन वन बुक. ओके, द कॉन्सेप्ट इज जस्ट कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम फोड़ोगे. एक किताब लगा लो बस. अगर आपने एनसीईआरटी एक बार कर ली है तो उसको दोबारा करो, दोबारा कर लिए तो तिबारा करो. डू इट 3-4 टाइम. उसके बाद भी टाइम बचता है, जो मुझे लगता नहीं बचेगा, उसके बाद लगा लो कोई और किताब. सिंपल सी बात बता रहा हूं, है ना. इसके अलावा कुछ जरूरत नहीं है. ज्यादा टेंशन नहीं लेना यार, बहुत सिंपल चीजें हैं ये. प्रैक्टिस करनी है सेम चीजों की. अब इसके ऊपर आते हैं. 0 to 2 पाई dx अपॉन e पावर साइन x प्लस o1. अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या लगा सकते हैं. प्रॉपर्टी नंबर 0, रिप्लेसिंग x विद t. एज आई सेड, प्रॉपर्टी नंबर 0 over here writing x as t is not going to help you. Property number 1 again is of no use because property number 1 says that I can reverse the limit. On reversing the limit नहीं होगा. आप ध्यान में रखिए, property number 0 and property number 1 alone is of no use. Alone is of no use. Alone is of no use. आपको ये कब काम आएंगी? व्हेन यू आर अप्लाइंग द अदर प्रॉपर्टीज, तभी काम आएंगी, अदरवाइज कोई यूज नहीं है. बट प्रॉपर्टी नंबर 2 विल बी ऑफ यूज व्हेन यू आर हैविंग. प्रॉपर्टी नंबर 2 कब काम आती है? व्हेन यू आर हैविंग मॉडुलस फंक्शन और जीआईएफ फंक्शन, और वेयर एवर योर फंक्शन इज चेंजिंग. जब फंक्शन चेंज होता है, एफ एन का मतलब फंक्शन चेंज होता है. अब प्रॉपर्टी नंबर 3 इज गोइंग टू बी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट. सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. तो आप हमेशा इसी के बारे में सोचो. नाउ व्हाट डज इट से? इट सेज दैट रिप्लेस x विद सम ऑफ द लिमिट 2 पाई प्लस 0, सम ऑफ द लिमिट माइनस x. ओनली x, dx नहीं, सिर्फ x को चेंज करना है. इफ यू विल डू सो, what you will be what you will have, that same limit, same integration,
sine 2 pi minus x, sum of the limit changing x with a plus b minus of x. समझ में आया? काजू मैं आपको जवाब दूंगा. जस्ट गिव मी 1 minute, लेट मी कंप्लीट दिस. इफ यू कैन वेट, आई विल बी डेफिनेटली आंसरिंग यू. ओके, नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, दैट रिप्लेसिंग x विद a प्लस b माइनस ऑफ x. नाउ अब अगर ऐसा होता है तो यहां पर आप क्या लिखोगे, 2 पाई माइनस ऑफ x e टू द पावर 2 पाई माइनस ऑफ x. अब सवाल ये कि डू आई नो द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज अगेन क्लास 11. आज ही के लेक्चर में फंक्शन चैप्टर हमने डिस्कस किया, लीनियर इनइक्वालिटी and now trigonometry. 11th will be of use if you guys are in the class 11. If you are watching this session just for the sake of what you are going to deal in the class 12, आप ये मान के चलिए class 11 is super duper important. Their basics, their basic concept are will be in the use. अब now sin 2 pi minus x क्या होता है? sin 2 pi minus x का वैल्यू है आपका minus of sin x. आप ये लिख लेना, sin 2 pi minus of x is equals to minus of sin x. अब since we are dealing with sin x, sin 2 pi minus x, now they can also ask you for cos. तो आपका आज का क्वेश्चन है that you will be answering in the chat box, what is cos 2 pi minus x. आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बताइए what is cos 2 pi minus x will be equals to. I will be answering this after a few minutes and you will cross check. ठीक है, चलिए ये हो गया. Now so sin 2 pi minus x converted to minus of sin x. Now e to the power minus sin x is 1 upon, अब इसके आगे करते हैं हम लोग. अब आप कहां पर पहुंच गए, e टू दी पावर माइनस साइन एक्स आ गया. ये समझ में आ गया कैसे आया. नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन e टू दी पावर साइन एक्स. ये हमने इंडिसेस के अंदर सीखा था, बिजनेस मैथमेटिक्स फॉर सीए. ऑन ट्यूसडे वी वर हैविंग द लेक्चर एट 3:30 PM. यू कैन सर्च इंडिसेस बिजनेस मैथमेटिक्स फॉर सीए आदित्य वेदांतु. अच्छा, अब ये जो चीज इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो इसका मतलब है अब आपको क्या करना है, दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हो कि यहां इसको ऐसे लिखो. तो बेसिकली अब आपके पास है क्या, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं. 1 अपॉन ई पावर ऑफ साइन एक्स, जस्ट राइटिंग साइन एक्स इज साइन प्लस 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ई पावर ऑफ साइन अपॉन 1 प्लस ई पावर ऑफ साइन. ये बात समझ में, ये कैसे आया, समझ में आया आपको. अब इसके बाद बस यहां इस प्रॉपर्टी नंबर 3 says after giving the change do add both the different forms of the same integration. यानी कि अब मैं इसको और इसको ऐड करने वाला हूं. इफ यू विल ऐड बोथ ऑफ देम तो क्या होगा बेटा, 1 प्लस ई पावर साइन एक्स. अब देखो लिख के दिखाऊंगा इसको मैं आपको. दोनों को अगर आपने ऐड किया तो 2i will be equals to 1 plus e power of sine x upon denominator is already having the same, दोनों का same है, e power of sine x dx. And this is how you will cancel both of them. And finally you will be having 2i is equals to dx. And integration of dx is x, यानी ये हुआ मेरा x from 0 to 2 pi. तो 2 pi minus 0 is 2 pi is equal to 2i, I equal to pi. नहीं समझ में आया तो प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स. ओके, तो दिस इज व्हाट वी हैव डन. मैं इसको फटाफट से रिवाइज करवाऊंगा एंड देन काजू आई विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चन. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दे हैव गिवन. First of all, the question was this, and now I am applying property number 3. Applying property number 3, which says that replace x with a plus b minus of x. A plus b minus of x. This is the property number 3. After applying so, you will be having in place of sin x, what is this? 0 plus 2 pi, sum of the limits, minus x, 2 pi minus x. So x will be replaced with 2 pi. Now next thing that we were understanding was sin 2 pi minus of x. The next thing is sin 2 pi minus of x.
Sine 2 pi minus of x was equals to minus of sine x. It was minus of sine x. That was the second thing. So after doing both of these things, we will reach till here. यहाँ हम पहुंच गए. इसके बाद you will be taking the basic LCM और मैंने यहाँ पर solve किया कि 1 upon e to the power minus sine x plus 1, writing sine x as minus s. You will be having this as 1 upon e to the power s plus 1, and then on simplifying you will reach till here. और अब ये वाला फॉर्म मेरे लिए बहुत जरूरी है. So marking this one now. Now I'm adding this is also I, this is also I. So adding both the I will be having 2I, and you will see numerator of both is different but denominator is same. But on adding, your numerator and denominator will become same and you will be having this. इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपका बनेगा 2I is equals to integration will be x from 0 to 2 pi. तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे 2 पाई माइनस 0 इज इक्वल टू 2 पाई. तो 2i इक्वल टू 2 पाई, i इक्वल्स टू पाई. आई होप इट्स क्लियर. इफ इट इज नॉट क्लियर गाइस, यू कैन लेट मी नो. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. ओके, अच्छा क्या बोलो सर, मैंने एनसीईआरटी की है और बहुत से सीनियर कह रहे हैं कि अगर मैं आरडी नहीं किया तो 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, और सर मैं ना गवर्नमेंट स्कूल में हूं तो वो क्वेश्चंस बहुत मुश्किल देते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो. मैंने क्या बोला, आपने एनसीईआरटी कम से कम डू एनसीईआरटी 3 टाइम्स. आपको एनसीईआरटी 3 बार जब लगा लो आफ्टर अप्लाइंग फॉर 3 टाइम, इसके बाद आपको टाइम बचता है. नो प्रॉब्लम इन अप्लाइंग आरडी शर्मा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये लगाओगे तो ही अच्छे मार्क्स आएंगे. पीपल आर स्कोरिंग, आप पेपर उठा के देखोगे, क्वेश्चंस आर डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर गिविंग इन ऑन द एनसीईआरटी. इसको आप लगाइए, आपको पेपर आप चेक करिए, डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यू विल फाउंड देम एग्जैक्टली सेम. इसके बाद टाइम बचता है, यू कैन अप्लाई दिस. I hope Kaju, now it's clear. I have cleared your doubts. Now this is a question which I have given you in on Telegram. ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको टेलीग्राम में दिया हुआ है. ओके, सो इंटीग्रेशन, सबसे पहले आपको ये चीज समझनी है. ओके, ओके, लेकिन यहां पर एक अच्छी बात मैं आपको समझाता हूं कि देखो, हालांकि ये भी करेक्ट है जो मैंने काटा, बट मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो इफ इनसाइड थिंग इज लेस देन 0, if inside thing is less than 0, then inside thing will be, after removing the mod sign, will become minus sign. Or you will say, after removing the mod sign, it will become minus times of inside thing if inside thing is less than 0. So inside thing was x, if x less than 0, then mod of x will be minus of x. But ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. But if inside thing is greater than equals to 0, in this case inside thing was x, so if x greater than equal to 0, then mod of x will be equals to x. आई बात समझ में? ये हुआ. अब इसके बाद from where to where we are integrating? From where to where we are integrating? We are integrating from minus 1 to 1. And 0 is a point in between, and I can see that about 0 my function is changing. Before 0 it's minus x, and after 0 it's x, but I need to consider before x till minus 1. So I will be integrating from minus 1 to 0, applying property number 2. Okay, now just wait Kaju, I will be answering for this. Minus 1 to 0 and from 0 to 1. ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन, टेक माइनस साइन आउटसाइड, एक्स स्क्वायर बाय 2. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर बाय 2. फ्रॉम 0 to 1 इसमें वैल्यू पुट करेंगे कि 1 बाय 2 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, और ये क्या बन गया आपका, टेक माइनस हाफ आउटसाइड, 1 0 स्क्वायर माइनस माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर, 0 स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर. इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो व्हाट आंसर यू विल बी हैविंग, आप चेक करिए इसको एक बार. 0 माइनस 1 इज माइनस 1, माइनस 1 इंटू माइनस हाफ, माइनस 1 into minus half is 1 by 2. So this will be 1 by 2 and this will be
1 square minus 0 square is 1. 1 minus 0 is 1. 1 into 1 by 2 is half. आई बात समझ में? So this is all what we have. तो सबसे पहले हमने क्या सीखा? Mod of x is equals to minus x for x less than 0. x less than 0 के लिए minus x और greater than 0 के लिए आपका यहां पर ये चीज है. And we have already discussed this. फिर इंटीग्रेशन किया हमने डायरेक्टली. आगे बढ़ते हैं. ओके नाउ प्रियंका यू विल अंडरस्टैंड द नेक्स्ट प्रॉब्लम. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम से आप लेट ज्वाइन करें तो आप नेक्स्ट प्रॉब्लम से समझिए. चलिए, तो आपके लिए एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आप टीचर होते तो व्हाट यू विल बी एक्सपेक्टिंग और व्हाट यू विल बी मतलब एज अ टीचर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आप टीचर होते तो आप क्या पढ़ाते और आप व्हाट सब्जेक्ट विल बी द फॉर योर पैशन. कौन सा सब्जेक्ट आप पैशन में पढ़ा सकते थे? ठीक है, आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो. दैट विल बी रियली रियली ग्रेट. It does not matter whether you wanted to be or not, but yes, if you can be a teacher then. अब अगला सवाल करते हैं. And I am looking for your answer in the comment box. Interesting answer will be displayed on the screen in the next class. It could be any teacher. Who would it be? अच्छा, अब ये नहीं पूछा क्या पढ़ाते. अगर आप कोई भी एक टीचर बन सकते थे तो वो कौन से टीचर होते, वो कौन सी मैम होती, वो कौन से सर होते. ग्रेट, वेरी गुड. Now evaluate from here to here. अब आपको क्या करना है? Always think of property number 3. Never think of property number 0. Never think of property number 1. Property number 2, whenever there is a modulus function or GIF function, तब लगाना है. Property number 3 is the main property. Now what does property number 3 says? Replace x in this case with sum of the limit minus of x. हमें बस इतना सा काम करना है. तो अगर आप ऐसा करोगे तो क्या मिलेगा? पाई बाई 3 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज 90 डिग्री. तो पाई बाई 2 माइनस ऑफ एक्स. पाई बाई 2 माइनस ऑफ एक्स. ओके, चलिए, पाई बाई 2 माइनस ऑफ एक्स. नाउ आई नीड टू रिप्लेस एक्स विद पाई बाई 2 माइनस एक्स. अब यहां पर दो चीजें आपसे मैं पूछूंगा. See, I am going to replace x with pi by 2 minus of x. Then obviously you are going to come across this basic trigonometric function sin pi by 2 minus of x. तो आप लोग मुझे बताओगे चैट बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर, what is sin of pi by 2 minus x. sin pi by 2 minus x को अगर आप करोगे तो क्या आंसर आएगा? And what is again, and you will be also dealing with over here, what is cos pi by 2 minus of x. सोचिए, दोनों का आंसर बताइए. What is sin pi by 2 minus of x and what is cos pi by 2 minus of x. Okay, Gunjan is saying I will teach cooking. Great, बहुत अच्छा. And if possible I teach business studies. तो आप business studies के सेशन में जाते हो गुंजन? I hope. क्या आंसर है sin pi by 2 minus of x? sin pi by 2 minus of x. क्या आंसर आएगा इसका? cos of x. और इसका आंसर कितना आएगा? sin of x. दो चीजें हैं. इसका मतलब this sin x will be converted to cos x and cos x will be converted to sin x because of property number 3. ये हमने देख लिया. अब दोनों को कर दो ऐड. जब आप दोनों को ऐड करोगे it will be 2i. Now 2i is equals to mod of sin inverse of x, mod of cos inverse of x. Denominator is same, so numerator will be get it as it is. Numerator will be added as it is. तो आप देखिए यहाँ पर दोनों सेम हो गए, दोनों को काटो और दोनों को काटने के बाद क्या मिलेगा? जस्ट इंटीग्रेशन फ्रॉम dx which is equals to x and limit is pi by 3 to pi by 6. तो pi by 3 minus pi by 6 is pi by 6. Now this is the answer for 2i. 2i कहाँ से आया? Addition of both. एडिशन ऑफ बोथ क्यों किया? बिकॉज इट गिव्स मी अ सिंपल इंटीग्रेशन. अच्छा, ये कैसे हो गया? सेम इंटीग्रेशन, डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग दिस बाय अप्लाइंग द प्रॉपर्टी नंबर 3. ओके, चलिए, तो आपका आंसर क्या आएगा? 2i इज इक्वल टू पाई बाय 6. ओके, लेट मी आस्क दिस.
ओके, ना, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, पाई बाई 12 आपका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉग ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा डी थीटा। बेटा काजू, आपका ये परम्यूटेशन चल रहा है, ठीक है, परम्यूटेशन चैप्टर इज गोइंग ऑन ओवर देयर, ओके, परम्यूटेशन चैप्टर इज गोइंग ऑन। आई होप आपकी क्वेश्चन का आंसर मिल गया, जस्ट थोड़ी देर में आपका टाइम आउट भी हट जाएगा, डोंट वरी, यू कैन इंटरेक्ट विद मी। Now, again, property number 0, property number 1 is of no use. What is property number 0? Replacing x with d. Property number 1, reversing the limit of no use. Alone they are of no use. Now, property number 2 will be applied whenever there is a modulus function or if there is a greater integer function. तो उसका भी यहाँ पर कोई काम नहीं है. So, property number 3 is the main important, very important property. अब वो क्या बोलती है? Replace x with sum of the limits. What is the limits? 3 pi plus minus pi minus x. This will be equals to, ये किससे हमने replace किया? So we have to replace x with 3 pi plus of minus pi is 2 pi minus x. Now, so we are going to write down, or over here it's theta. So we are going to replace theta. अगर आप यहाँ पर theta use कर रहे हो तो you can use theta over here, but the thing will remain same. Now, in place of theta, I am going to write down 2 pi minus theta. तो अब हमें किसके साथ डील करना? ट्रिग्नोमेट्री, the 2 pi minus theta. Guys, property number 3 will be completely based upon trigonometry. आप ये समझ लीजिए इस बात को. Property number 3 का मतलब है it's a question of trigonometry. खत्म. Most of your question will be from trigonometry or property number 3. Now the thing is, what is sec of 2 pi minus theta? तो अगर आपको ये नहीं आता है तो either you can watch sessions of trigonometry. I have completed for term 2 11th class mathematics. Right now it's going permutation combination. This is equals to sec theta, but tan 2 pi minus theta, tan 2 pi minus theta is equals to minus of tan theta. Minus of tan theta. ओके, ये दो चीजें हैं. माइनस ऑफ tan थीटा, बेटा सेम 330, डेली 330, ठीक है. तो दीज आर द बेसिक ट्रिग्नोमेट्री वाली थिंग जो हमें करनी होगी. इसके बाद यहां पुट करो. दैट मीन्स माई क्वेश्चन आई विल बी कन्वर्टेड इन दिस फॉर्म. इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि मेरा sec theta minus tan theta after applying the property will be converted to sec theta plus tan theta. Now, always remember, we have to add, always we have to add both different form of integration. If by chance ever you are going to have same form of integration, that means you have to do your question with property number 4 or 5 or by indefinite integration. अब यहां पर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? log a, again chapter class 11 chapter functions, we have discussed about the logarithm functions. Log a plus log b is log of ab. log of ab ये अपना हो गया, दोनों को किया ऐड. तो log sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस log sec थीटा प्लस tan थीटा, मतलब क्या हो गया? दोनों मल्टीप्लाई हो गए. log sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा, मतलब a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. एंड अब यहां पर आप एक और ट्रिग्नोमेट्री के साथ आ गए कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज द थिंग. sec square theta minus tan square theta is the thing which is equals to 1. log 1 is 0. अब ये 0 हो गया, 0 d theta is 0. आई बात समझ में? तो दिस इज हाउ विल बी हैविंग आंसर. आई विल क्विकली रिवाइज द थिंग्स. मैं फटाफट से इसको रिवाइज कर देता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉपर्टी नंबर 3 सेज रिप्लेस योर थीटा विद सम ऑफ द लिमिट्स माइनस ऑफ थीटा. Doing so, we have to replace theta with 2 pi minus theta. Now, we have to deal with sec 2 pi minus theta, which is equal to sec theta. And tan 2 pi minus theta is minus of tan theta. Putting or applying this property number 3 will result this part. Now,
Always remember property number 3 must deliver the different results and we have to add both the different result of the same integration. So I plus I is always 2i, and over here on addition of this we will come across log a plus log b. Log a plus log b is log ab, and doing so we will be having sec theta minus tan theta into sec theta plus tan theta is of the form x minus y into x plus y, which is x square minus y square. In this case sec square minus tan square is equal to 1, and log 1 is always is equals to 0. ये हमेशा 0 होता है, and integration of 0 dx or 0 d theta is always 0. So 2i is equal to 0, I is equal to 0. I hope clear. चलिए, अरे बिल्कुल आइए आप देखो, मेरा लेक्चर हमेशा 3:30 को होता है। शायद अभी हम लोग चेक कर रहे हैं कि आपका टाइमिंग एक कंफर्टेबल टाइम पर हो जाए, आइदर अराउंड 5:30 के अराउंड अगर आप फ्री हो, या फिर रात को 10:30 बजे के अराउंड। कोई दिक्कत नहीं बेटा, आइए आप सेशन में एंजॉय करो, स्पैम करो, लेकिन हाँ कोई दिक्कत नहीं। बट एनीवे अगर आप ध्यान से भी बैठोगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। डजंट मैटर यू आर 11th or 12th। तो ये टाइमिंग अभी हमारा 3:30 है फॉर योर ऑल द थिंग्स। अब आपने पूछ ही लिया तो मैं सबको बता ही देता हूं। देखो 11th की आपके 2 लेक्चर्स होंगे, 12th के आपके 2 लेक्चर्स होंगे, एंड फॉर बिजनेस मैथमेटिक्स सीए, बिजनेस मैथमेटिक्स सीए के भी आपके 2 लेक्चर्स होंगे। क्लियर? और आपको करना क्या है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहां पर आई एम गिविंग डेली नोटिफिकेशन कि आपका क्लास होने वाला है, एंड आई एम ऑल्सो गिविंग द क्विजेस ओवर देयर। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। एज ऑफ नाउ टाइमिंग इज 3:30 PM। सून आई एम थिंकिंग, अगर आपको कंफर्टेबल है, आई हैव स्टार्टेड अ पोल ऑन योर यूट्यूब कम्युनिटी पेज, जहां पर मैंने आपको पूछा है इज दिस योर कंफर्टेबल टाइम। यू कैन ऑल्सो राइट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स कि आपके लिए फीजिबल टाइम क्या है। मैंने यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3:30, 5:30 एंड 10:30। तो जो टाइम आपको सही लगता है उसके लिए आप वोट कर सकते हो, और यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। चलिए, तो वापस से पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, अच्छा एक और चीज यहाँ पर कि वी आर ऑल्सो हैविंग वेदांतु एनरोलमेंट कोर्स। एनरोलमेंट क्यों चाहिए भाई? एनरोलमेंट का सीधा सा मतलब होता है प्रोसेस बिकम्स इजी। हाउ प्रोसेस बिकम्स इजी? सी इफ यू विल डू इट अलोन बाय योरसेल्फ, या फिर आप यूट्यूब पर सीखते हो, तो देखो ये उससे ज्यादा इजी कैसे हो गया। यहाँ पर आपके पास अलग अलग टीम है, यहाँ पर आपके लिए मेंटर्स हैं जो आपको नॉन एकेडमिकली गाइड करते हैं। अगर आपका डिमोटिवेशन हो रहा है तो आप उनके साथ अपने शेयर कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट टीम, एंड ये आपका कंटेंट डेवलपर्स टीम। तो कंटेंट डेवलपर एक्सपर्ट टीम हो गए ये, और टीचर्स तो आपके पास है ही। तो ये बहुत बड़ी टीम, यानी कि आप अकेले काम करोगे, यू आर हैविंग 24 आवर्स, बट एनरोलमेंट गिव यू एक्सेस टू द टाइम ऑफ द एक्सपर्ट व्हिच इज कंट्रीब्यूटिंग इन योर सक्सेस। अब समझते हैं कैसे कैसे आप टाइम बचाकर अपनी प्रोसेस को बहुत इजी कर सकते हो। नाउ अगर आपको डाउट आते ही होंगे, डेफिनेटली यू आर हैविंग लॉट ऑफ डाउट। अब डाउट कब आते हैं? आइदर ड्यूरिंग द क्लास और आफ्टर द क्लास। अब पहले इसको समझ लेते हैं। आफ्टर द क्लास हु विल टेक केयर? देयर आर 2 ऑप्शंस। आफ्टर द क्लास, अगर आपका क्लास खत्म हो जाता है उसके बाद आइदर यू हैव टू वेट फॉर 24 आवर्स, या तो आप 24 घंटे वेट करो, या फिर you are having an option to ask your friend, or if you are not having access to such kind of friend who can solve all your doubts, you are having the वेदांतु एप्लीकेशन। अब ये वेदांतु एप्लीकेशन क्या करना है? एग्जैक्टली सेम प्रोसेस एज यू आर अपलोडिंग योर पिक्स ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम, यू आर अपलोडिंग योर पोस्ट, सेम वे ऑन दिस एप्लीकेशन यू हैव टू अपलोड अ पिक्चर, अ स्क्रीनशॉट और अ पोस्ट ओवर देयर। वहां पर आपको लिख देना है स्क्रीन या पिक्चर जो भी पोस्ट करके, यू विल गेट एन इमीडिएट रिप्लाई फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट टीम। यानी कि इफ यू आर हैविंग अ डाउट राइट नाउ, विद इन 15 मिनट्स 15 मिनट के अंदर अंदर आपका पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा, एंड यू कैन कम्युनिकेट थ्रू। अब कम्युनिकेशन कैसे होगा? दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। सो यू विल बी कम्युनिकेटिंग, यू विल बी इंटरेक्टिंग। अब मैं आपसे पूछूं राइट नाउ हाउ यू आर इंटरेक्टिंग विद मी इन अ टेक्स्ट फॉर्मेट, बट आई एम वेरी श्योर this is not, and I believe so that this is not a very good form of communicating, है ना?
क्योंकि आपने मूवी देखी है वो वाली, अच्छा अच्छा अच्छा, तो हर एक शब्द के मतलब होते हैं। दूसरी चीज की, इट्स रियली टीडियस टास्क टू राइट डाउन द होल क्वेश्चन, स्पेशली ऑफ क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स, वेयर लेट्स सपोज इफ आई नीड टू राइट डाउन द इंटीग्रेशन, देन यू नीड टू राइट डाउन INTEGRATION। आपको सिंबल नहीं पता है कैसे, तो वी आर ऑल्सो गिविंग यू फैसिलिटी टू ऑडियो, यानी कि यू कैन स्पीक योर क्वेश्चन, और या फिर यू कैन ऑल्सो शो योर क्वेश्चन थ्रू वीडियो। बाकी आपका पिक्चर मोड तो है ही। तो इन सारे कम्युनिकेशन मोड से वी विल मेक श्योर दैट वी आर हैविंग मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, सो योर डाउट विल बी सॉल्व एफिशिएंटली। आपका डाउट सॉल्व होना चाहिए। इसके अलावा व्हाट आर द अदर थिंग्स? डाउट ड्यूरिंग द क्लास। अब क्लास में डाउट आया तो यू आर हैविंग मास्टर टीचर और यू आर हैविंग क्लास टीचर। मास्टर टीचर इज द वन हु विल टीच योर सब्जेक्ट एंड योर डाउट विल बी सॉल्व्ड in front of all. If you are comfortable, then great. If you are not comfortable, if you want one-to-one interaction, then we are providing you a separate teacher in every class. Every student will be having a teacher. हर क्लास के अंदर एक टीचर जरूर होगा आपके लिए, जो सेपरेटली आपको वन टू वन इंटरेक्ट करेगा, एंड विल मेक श्योर all your doubts during the class and after the class will be resolved. इसके अलावा you will be having access to highly qualified teachers, and we all master teachers together will make sure that you are not having any kind of doubts in the concept, or you can say we will make sure that you are having the conceptual clarity. इसके अलावा कंटेंट डेवलपर एक्सपर्ट टीम विल मेक श्योर दैट यू आर सेविंग योर टाइम डूइंग ओनली रिलेवेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जामिनेशन, यानी कि आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, एनसीईआरटी है, आर डी शर्मा है, बहुत सारी किताबें हैं आपके पास, ओसवाल, जैदवाल, पिंडवाल, there are infinite books, but the thing is you cannot do all the books in a given time limit. So content developer expert team is doing their own decision, will make sure you will do questions which are only relevant to your examination. Now, we will be providing you these questions through assignments after every lecture, and through quizzes during the lecture, and through solved examples during the lecture, and through tests. And after this test, you will be having the analysis report of your performance. A test based on whatever you have read in a week or in a month. जो भी आपने पिछले दिनों में पढ़ा होगा वो सब कुछ टेस्ट में पूछ लिया जाएगा, and we'll make sure wherever you are having a weakness, so this analysis report will make you improve in your weak areas. बहुत सारे different parameters हैं। इसके अलावा वी विल मेक श्योर दैट वी आर कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑन टाइम विद अ स्पेस, विद अ स्पीड व्हिच रियली सूट्स यू टू अंडरस्टैंड। तो इसलिए फटाफट से एनरोल करेंगे ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा टाइम रहे, एंड देयर विल बी अ रिवीजन प्लान ऑलवेज। अब फिलहाल वी आर हैविंग जस्ट 50 डेज, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 50 दिन बचे हैं अप्रोक्सीमेटली, यस और नो, अ होल मंथ ऑफ फेब्रुवरी, यस, that's 3rd of February. So you will be having 25 days of February, and you can say now 15 days of February. So around you are having 45 days total in total. अब इस 45 days में we will be doing the crash course. Now this crash course is going to help you in developing the concept. अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी भी, तो still we will be covering everything on time. थोड़ी सी मेहनत आपके साइड से लगेगी कि हम आपको जो होमवर्क दे रहे हैं आप उसको टाइमली खत्म करो, और आपने पहले से ही बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, डेफिनेटली दिस विल बी अ बूस्ट। अच्छा, एक और चीज बता दूं, लास्ट टर्म 1 वी हैव डन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इवन बिफोर द एग्जामिनेशन फॉर 45 days, एंड जस्ट बिफोर द डे ऑफ एग्जामिनेशन यू विल बी हैविंग अ चॉइस, या तो आप खुद से पढ़ो, लेकिन हमने क्या किया था, वी होल डे मतलब 12-12 घंटे हमने वेदांतु प्रो पर प्रैक्टिस की थी इस चीज के लिए। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि हाउ यू गाइस कैन एनरोल, फटाफट से देखते हैं इस चीज को। Over here, this is a YouTube. Now this is a live session. If I will click on this, if I will click on this, okay, here Kaju is crying for something. ओके, क्या क्या बोल रहे हो कि सर मैं 12th में वेदांतु लेना चाहती हूँ पर आपकी फीस ज्यादा है, पापा मना करेंगे। ओके, आई थिंक दिस इज
much cheaper. मैं आपको एक एनालिसिस दिखाऊंगा जरूर, है ना? काज यू स्टे विद मी बिकॉज आई थिंक दिस इज really very cheap. मतलब in terms of price, in terms of quality, it's really precious. अच्छा, अब सबसे पहली चीज, दिस इज अ प्ले स्टोर लिंक. इस पर क्लिक करते हैं, a window will pop up in your mobile phone. You will direct to the Google Play Store. अगर आपके पास एप्पल है तो एप्पल प्ले स्टोर हो जाएगा आपका, एप स्टोर. इफ यू क्लिक ऑन दिस, आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी. वाई दिस एप्लीकेशन? सो दैट वी कैन रिजॉल्व अवर डाउट्स एंड वी कैन जॉइन अवर क्लास एंड वी कैन चेक अवर शेड्यूल, वी कैन गिव अवर टेस्ट, वी कैन डू अवर असाइनमेंट. सब कुछ इस एप्लीकेशन पर है. यानी कि just your mobile phone can connect you with us and make your preparation super strong. Second thing, let's click on this. So window will pop up like this. Now this window is for CBSE Commerce Term 2 crash course. Now you are in the sir, I am not from class 12. I do not want a crash course for class 12. No problem. Go for class 11. Now for class 11, you are having CBSE Term 2 full syllabus. CBSE Commerce for महाराष्ट्र बोर्ड हो गया, ग्रेड्स 11 12 सीबीएसई कॉमर्स, सीबीएसई साइंस का, जेडबलई नीट, सबका कोर्स यहाँ पर आपको है. तो आप ये भी क्लिक कर सकते हो. ये आपका खुल गया सीबीएसई कॉमर्स टर्म 2 फुल सिलेबस प्रिपरेशन. तो आपके ऊपर है. राइट नाउ लेट मी गाइड यू टेकिंग एनी वन कोर्स. मैं सिर्फ एक कोर्स लेता हूँ फिलहाल. लेट्स फोकस ऑन कॉमर्स टर्म 2 क्रैश कोर्स. ठीक है. See, you have to do sign up. अगर आप साइन इन नहीं करोगे, later this website will ask you. Now, this is a plan. पहले तो प्राइसिंग की बात कर लेते हैं. And what are the features you will be having? Live interactive online class, test series, analysis, assignments, and notes about which I haven't talked. So you will be given notes, not printed, but the handwritten notes. समझ में आया? हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे आपको, रिटन बाय सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स. You will be having doubt solving during the class, dual mode, through master teacher or through class teacher. Doubt solving on mobile application even after the class and during the class also. But this thing is only available in the classic. Now, अब यहां पर आपके पास दोनों चीजें, आपको दोनों प्लान में अंतर समझ में आ गया. आई विल प्रेफर टू गो विद द वेदांतु प्रो लाइट. दिस प्लान इज ऑफ 10,000 rupees, but you are, if you are applying the code ADAPRO, this will cost you 6300. आई बात समझ में? इसमें क्या कवर होगा? वी विल बी कवरिंग 4 subjects. अच्छा, if we are covering 4 subjects, that means how much one subject cost you? एक सब्जेक्ट कितने का हुआ आपको? अराउंड इफ आई विल से, दिस विल कॉस्ट यू 1575 rupees. राउंड फिगर, लेट्स कॉल 1600 rupees per subject. अच्छा, फॉर हाउ मेनी डेज वी आर डूइंग सो? For approximate, we are covering the whole syllabus of term 2, but let's call it for number of days. So we will be having approximately, let's say 40 days. So 1600 divided by 40, it will give you 40 rupees per day, per subject. I hope it's clear. So what is the pricing? 40 rupees per day per subject. You are covering the whole syllabus. So I hope कि ये pricing आपको बहुत अच्छी लगी हो. बहुत this is something cost budget something. चलिए, प्राइसिंग की बात होगी. इसके अलावा कोड आपको ये लगाना पड़ेगा, तभी आपको ऑफ मिलेगा 3700 rupees का. इसके अलावा you will be having 4 subjects: maths, economics, commerce and accountants. Here we are having subject wise batches and the schedule वाला part. Okay, इसके अलावा this is a basic timetable, a general timetable, and this is date wise timetable. For example, ये आपका date wise और time wise timetable हो जाएगा, topic wise भी. इसके अलावा if you are having, this is your past year results, this is your testimonial from parents and the students, and this is frequently asked question. If you are having any question regarding this, आप यहाँ पर कर. But still, let's suppose I am having something which I'm having a doubt which is not clear on this website. No problem. Let's click on the Lakshya. And you can write down, hi, I am having a doubt. Let's suppose I'm having a query. So a person will be connecting with you. एक person आपसे connect करेंगे. So let's say Irfan has entered the conversation. अब आप पूछ सकते हो अपनी problem. Easy. So if you're having any problem, you can ask it out over here. Clear? So apart from this, you can hit the like button,
You can share this video. How you can share? Through WhatsApp, through copying the link and pasting it over wherever you want. Now, and do make a subscribe and hit the bell icon button. If you will hit the bell icon button, it will give you notification. You will not miss any class. So I have cleared most of all your doubts, but still if you are having a doubt, you can ask. सर हमें कैसे पता चलेगा कौन से क्वेश्चन में परम्यूटेशन लगाना है? बेटा क्लास ज्वाइन करोगे आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है? So this is your list of superstars और आप भी अच्छे तैयारी करके easy smooth way में आप भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो. Now this is the last question of the day. So आप इस क्वेश्चन को अटेंड करिए and I will be discussing this question in a minute. हरिए आप लोग. Now, what is the question? Question क्या है अपना? Sin 6x by x. तो हम क्या करेंगे? We are going to apply property number 3. What does property number 3 says? Property number 3 says, beta, कि replace x with sum of the limit pi plus 0 is pi minus of x. Now, sin pi minus of x, ये आप लिख लीजिए. Sin pi minus x is sin x. Sin pi minus x is sin x, but the question arises if I will replace x with pi minus x, so 6x will be 6 pi minus x. No need to worry. इसको भी solve कर लेते हैं. Sin 6 pi minus of x. अब यहां आपने बेसिक रूल पढ़ना है. ये आपका बनेगा माइनस ऑफ साइन एक्स. नाउ व्हाट इज द बेसिक थंब रूल? बेसिक थंब रूल से साइन 2n pi plus minus of theta, or let's not call it plus minus, just writing over here sine 2n pi minus of theta is equals to sine 2n pi minus theta is equals to minus of sine theta, and we have done exactly same exercise. कहां पर sine 2 pi minus of x was minus of sine x. तो ये आपका ये सवाल बन गया. दोनों को ऐड करो. This is also y, this is also y, I plus I. Now this is minus time, so I plus I 2i, and this becomes 0. I equals to 0. Easy. So answer is option number C. अब अगला क्वेश्चन ये है आपका. Now what does it say? अब ये आपका आ गया GIF, greatest integer function. अब आप ध्यान से सुनना. I am integrating from 0 to 2. अब mod x की वैल्यू, so I am writing the value of mod x from 0 to 1. Not mod x. Greatest integer from 0 to 1 is 0. Okay, and from 1 to 2 it's 1. What is greatest integer function? Greatest integer function means an integer less than or equal to the value given inside the closed bracket. I repeat again. Greatest integer function means an integer value less than or equal to the number given inside this. And less than कितना less than? Just less than. जो नंबर आपको दिया हुआ है उससे जस्ट छोटा इंटीजर या उसके बराबर का इंटीजर. अब 0.0 से 1 में कोई सा भी नंबर उठाओ, उससे जस्ट छोटा इंटीजर यही मिलेगा. टेक एनी नंबर फ्रॉम 1 to 2, एन इंटीजर जस्ट लेस देन इक्वल टू इज 1. तो यहां पर आपको सिर्फ इतना सा करना है कि वी आर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 to 1 एंड फ्रॉम 1 to 2. फ्रॉम 0 to 1 mod x becomes 0. So ये पार्ट तो हो गया एलिमिनेट बिकॉज 0 into anything is 0. But from 1 to 2, GIF of x becomes 1. So integration of x square is the only thing that we are doing. And integration of x power n dx is equals to x power n plus 1 upon n plus 1. So x square integration is x cube by 3. Integrating from 1 to 2. तो कितना आएगा? 2 cube 8 minus 1 cube 1. 8 minus 1 7 by 3. Okay. तो ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए. आई रियली वांटेड टू नो मोर अबाउट यू गाइस. एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था इस सेशन के अंदर अबाउट यू गाइस कि इफ यू वांटेड टू बी अ टीचर व्हाट सब्जेक्ट यू विल टीच एंड
what kind of teacher you wanted to be. So Gunjan has replied, and I will make sure that Gunjan is having a name on the leaderboard in the next class. Next question I'm asking you, what phobia do you have? What fear you are having? अब कुछ लोगों को आपको हो सकता है कि सर मुझे एग्जाम में बैठने से पहले डर लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता है. तो आप इसको सोचिए इसके बारे में, what fear you are having, and we'll make sure that you will eliminate this. अब इसका ग्राफ बनाते हैं पहले cos x फंक्शन का. So this is the graph of cos x function from 0 to pi. और आप देख रहे हो यहां पर हमने क्या बोला था, when you are having a mod function always check inside function is positive from where to where. It's positive from 0 to pi by 2. 0 to pi by 2. So 0 से pi by 2 ये पॉजिटिव है तो हम इसको लिखेंगे cos x. But from pi by 2 to pi, from pi by 2 to pi, we are having inside function as negative. So if you will remove the mod sign, this will be equals to minus of cos x. So mod of cos x, you can write down as a summary over here, is equals to cos x. कहां से कहां तक? Again trigonometry class 11. From 0 to pi by 2. If your x lies from 0 to pi by 2, it's cos x. But if your x lies from pi by 2 to pi, then it will be equals to minus of cos x. And we are breaking our function, or we are changing our function about x equals to pi by 2. Okay, so cos x from 0 to pi by 2 and minus of cos x from pi by 2 to pi. इसको इंटीग्रेट किया, integration of cos x is sin 0 to pi by 2, sin pi by 2 minus sin 0, sin pi by 2 is 1, sin 0 is 0, 1 minus 0 is 1. This part, now this part, minus of cos x, but integration of cos x is sin x, pi by 2 to pi. So sin pi is 0 minus sin pi by 2 is 1. 0 minus 1 is minus 1. Minus 1 of minus is 1. So ये आपका बन गया 1 plus 1 is equals to 2. Clear? The only thing that we have to be clear over here is graph of cos x. So I will draw it again, graph of cos x. So this is pi by 2, this is pi, and this is 0. So as you can see, from 0 to pi by 2, cos is 0 positive. So we will break our function about the value about which function is changing its sign. Before pi by 2 it's positive, after pi by 2 it becomes negative. बस इतना सा हमें फंक्शन को ध्यान में रखना था. तो आंसर is this. Now next question. Now again property number 3, property number 0, property number 1 alone is not of no use. Property number 2, you must have GIF or modulus function, वो भी नहीं आया. Property number 3. Now property number 3 says replace x with sum of the limit minus of x. So over here applying so अगर आप ऐसा करते तो sin pi by 2 minus of x is equals to cos of x. ये आपका cos x बन जाएगा. लेकिन if we have done this, cos pi by 2 minus of x, this will be equals to sin of x. अब यहां पर पुट किया तो sin x becomes cos x becomes sin x, but here sin x becomes cos x becomes sin x. You will see denominator will remain exactly same, but numerator has become minus times. तो उससे फायदा क्या होगा? उससे होगा ये कि when you will add both different forms of the same integration I, you will be having 0 because denominator is exactly same. Numerator will then get directly added, cos minus cos, sin minus sin, 0. 2i equals to 0, I is equals to 0. Again, फिर से समझा देता हूं. sin pi by 2 minus x, cos pi by 2 minus x is sin x. Why we are replacing x with pi by 2 minus x? Because property number 3 says replacing x with sum of the limits minus x. So sum of the limits is pi by 2. So replacing x with sum of the limits minus x. Now doing so and applying the trigonometric conversion, you are going to have just minus times of it, but integration is same. ठीक है? So this is all guys. I hope you have understood how to apply property number 0, 1, 2 and 3. In the next class, we will be seeing property number 4 and 5.
Property number 4 and 5 is basically the special case of property number 3 by using property number 2, 1 and 0. And we'll be always also seeing some questions. See, you will never see any question which is directly based on property number 0 and 1. But we'll be seeing questions where we'll be applying property number 0 and 1 in the third session, in the 10th session of integration. Yani ki, this is your 8th session. Then you will be having the next one, 9th session on the basis of property, and 10 where we'll be doing the miscellaneous. In the case of miscellaneous, I will be showing you how to apply other properties or all the properties together. I hope you have understood all the things from this session, including the enrollment wala part. Now, an interesting question, a logical question for all of you. At the baseball game, Henry was sitting in seat 253. Marla was sitting to the right of the Henry in seat 254. In the seat to the left of Henry was George. Inez was sitting to the left of George. Which seat is Inez sitting in? It doesn't matter whether it's in your syllabus or not. It's a logical developing question. So if you want to develop your logical thinking and want to apply that logical developing thinking in your basic questions of mathematics, तो आप इसको लगा लीजिएगा. This is all, guys. Stay tuned. I'm coming daily live at 3:30 p.m. covering business mathematics for CA, covering class 11th and covering class 12th board examination preparation. This is all, and make sure to enroll now to grab a discount of your 37%. You will be applying the code ADAPRO. ये कोड लगाने के बाद आपको 37% का ऑफ मिल जाएगा. This is all from the day from my side. Do not forget to join the Telegram group. There I am giving you notifications so that you will not miss any class. And also we are solving daily one question from mathematics, one question from other subjects. So you will be joining this Telegram link, which is given in the description box. I have shown it to you. So thank you so much for joining the session, and make sure to hit the like button. Those who have already hit the like, thank you so much, guys. Share this video, and I have also shown you how you can share on your social media platforms and to your friends. Subscribe if you are coming over here first time, and hit the bell icon to not miss any notification. आज के लिए इतना ही. Till then, take care. Bye bye. See you all in the next class.